So, welcome everyone to this round of The Citizen on the Record. We have two very senior journalists with us who have covered several elections, who are well known. One is in print, one also now in video and was in TV. And we are very happy to have with us Sunita Aron, who's a political analyst. She's the senior resident editor of Hindustan Times, based in Lucknow, and has been watching this election and the coverage by the media very, very closely. And we have Alok Joshi, who needs no introduction because he gets far more hits and followers than our program does. But he's worked with the Times Group, with the Dainik Jagran, BBC World Services, and others, and is with Satya Hindi now. It's called Satya Hindi, right? Yeah. Right. And he's been, you must have seen him, like we watch him all the time, interviewing a lot of journalists and bringing the news fresh to us. So thank you both of you for joining us. So ये discussion, and this can be Hindi, English, whatever we are comfortable with at that point in time. So this is more about how the media is covering the UP elections. I'm not even going into Punjab and others, just the Uttar Pradesh elections, because one, it's a very crucial election. It's a very closely combated election. And usme, we had this image of a television rath being flagged out by the chief minister. So I'll start with you, Alok ji. जब इस तरह की कोई चीज होती है, then what does it really, what is the signal that it sends out when media allows a political leader, it could be the chief minister, can be the opposition leader, anyone, to flag off his journey into the field? Right. तो देखिए सीमा, ये जो हुआ है, ये अब इसको किस तरह एक्सप्लेन किया जाए मुझे समझ में नहीं आता है। ये बहुत बेहद शर्मनाक चीज़ है दोनों तरफ से, न सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसने वो यात्रा फ्लैग ऑफ करवाई, बल्कि उस मुख्यमंत्री के लिए भी जिसने ऐसी एक चुनावी यात्रा को फ्लैग ऑफ करना मंजूर किया, जबकि वैसे वो दूसरों कामों के लिए उनके पास समय नहीं होता है। आप किसी अखबार का नया एडिशन निकाल रहे हैं, आप किसी चैनल का एक नया चैनल खोल रहे हैं, उस वक्त किसी पॉलिटिशियन को आप बुला लेते हैं और वो आपके चैनल के इनॉग्रेशन में शामिल होते हैं, ये एक अलग बात है। आपका कोई आप एनुअल इवेंट करते हैं जिसमें आप बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, लेकिन आप इलेक्शन कवरेज करने जा रहे हैं, उस इलेक्शन की कवरेज जिस इलेक्शन में ये मुख्यमंत्री महोदय एक मेन कंटेंडर्स में से एक हैं, और आप उनसे अपनी रैली शुरू करवा रहे हैं। रैली क्या है, चुनाव यात्रा एक बस थी उस टेलीविजन चैनल की, उसको झंडा दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री। चलिए, अगर आप रास्ते में अलग-अलग पड़ावों पे विपक्ष के भी 5-7 नेताओं से झंडी दिखवा देते और कल्मिनेट करते हुए सारे नेताओं को बुला के कॉन्क्लेव कर लेते, तो समझ में आता भाई आपने एक इवेंट क्रिएट किया है जिसमें मुख्यमंत्री भी वन ऑफ द पर्सन्स हैं। लेकिन जिस अंदाज में आपने किया उससे साफ दिखता है कि आप और सरकार आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, और आप दोनों की एक सीधी भाषा में कहूंगा तो साठगांठ चल रही है। और ये साठगांठ सिर्फ वहीं नहीं दिखती है, साठगांठ आपको मीडिया पर कई और तरीकों से दिखाई पड़ती है। जब कोई टेलीविजन डिबेट होती है, और आप इस बात से भी अंदाजा लगाइए सीमा कि मैं करीब साल भर हो गया मुझे लखनऊ में वापस आकर रहते हुए, मैं अखबार भी करीब करीब नहीं पढ़ता हूं और टेलीविजन तो बिल्कुल नहीं देखता हूं। किसी दिन बहुत मौका हुआ, कोई रैली है, उस दिन देखनी है कि ये रैली, तो फिर 3-4 चैनलों पे सर्फ करके देख लेते हैं। इनके बिना अपना गुजारा हो रहा है, जबकि मैं न्यूज़ के कारोबार में हूँ। मेरे लिए बिल्कुल ताज़ा खबरें मेरे पास होनी ज़रूरी होती हैं। इसके बावजूद अगर इन दोनों के बिना मेरा काम चल रहा है, तो अब ये किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अखबार ऐसे हैं जिनके बिना हमारा आपका गुजारा नहीं होता था। लेकिन आज की तारीख में, और सुनीता जी बेहतर बता पाएंगी, और हो सकता है कि वो न बता पाएं क्योंकि वो जिस संगठन में काम कर रही हैं वो इस वक्त यहीं काम कर रहा है, लेकिन ये दिखाई पड़ता है कि फ्रंट पेज पर कौन सी खबरें आएंगी, कौन सी खबरें नहीं आएंगी, ये साफ दिखता है। यहाँ तक कि विज्ञापनों की भी बिक्री जब हो रही है, और प्रधानमंत्री ने अपनी एक मन की बात में, आपको अगर याद हो 2 महीना पहले कहा कि हम प्रचार माध्यमों ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। जी। जब आप प्रचार माध्यमों ने साथ दिया है कहते हैं, पहले वो मीडिया कहा करते थे, आप याद करें, उससे पहले अखबारों ने, टेलीविजन ने ऐसे कहा जाता था, या समाचार माध्यम कहा जाता था। प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से मीडिया इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन उस बार उन्होंने उनको प्रचार माध्यम कहा। इससे आप समझ लीजिए कि सरकार का के नजरिए में
आप यानी हम मीडिया वाले, जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने को कहता है, वो कहाँ है? वो उसको प्रचार माध्यम समझ रहे हैं और उसका प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, Sunita, so something Alok has already thrown at you, but you've been sort of representing, and you've been the resident editor of a mainstream newspaper, and I'm not going into how you handle news or how you don't, but it is a problem, right? In the way the media at large is conducting itself, insofar as politicians are concerned. Look, Seema, I think because Alok mentioned about my paper and the constraints that we may be in, let me tell you something very frankly. There is one thing is perception and one thing what actually happens. Now, there was a perception at one point of time that Hindustan Times is more inclined towards Congress. Then the perception came that it is with this particular party, and then now we have BJP. I'm heading an institution, and I try to ensure that the opposition voice is also there on page one. It is a concerted effort to do that. Now, why BJP as of now, you'll see more of it in our, say on our page one or inside, is because they have 10 people, important people moving around the state and saying something that makes news. On the other side, Mayawati is hardly addressing rallies. As and when she does, we make it a point. And when it comes to Priyanka Gandhi or Akhilesh Yadav, as and when we get to know, we publish it. Akhilesh, we get to know. Om Prakash Rajpur and Swami Prasad Maurya type. This is what I'm trying to say is that the perception is that you are under a lot of pressure. Yeah. As of now, my editor or my management has not told me what to do, what not to do. For me, when PM is saying something, and if he's saying something as big as cycle and bombs, or Amit Shah is saying something, because he's the guy who's managing the show in UP, it becomes an important copy for me. Anything Akhilesh says or Jayant said, when the first phase was, it was important for us. So it's not that deliberately we are trying to give more space to BJP, but they automatically get it. If I have 2 copies from the opposition, I have 8 copies from the BJP, because they are hyperactive. They have a galaxy of leaders across the state. How do you ensure? And then you have Yogi Adityanath hopping, doing 8 rallies. So we try, I tell my reporters, yaar, ek hi mein, let's sum it up. We can't do 8, it becomes a full page. How can we do that? So we try to do it. Coming to space or prachar, there are various ways of doing prachar. This advertorial thing is very confusing. जो reader को समझ नहीं आता है, ad तो समझ आता है, but editorial, I'm saying it in Hindi deliberately so that readers understand it. Editorial looks like an edit. हमें पता चलता है इसका font फर्क है, इसका design फर्क है, but common man doesn't understand, and that is basically prachar. Then there are different ways of, you have more money, you have more funds, so you give ads. You give full page, whereas Akhilesh perhaps and his party will be able to give only a quarter page of an ad. So, yes, the ruling party, whichsoever is a ruling party, somehow gets more space because of various reasons. I think 2017, when Akhilesh was there, that time, unfortunately, his family dispute took more space than what he was doing and the work that he was doing, because it all started before the elections and it was all over the place with Chipal Singh Yadav saying it and all that stuff. So I personally feel that the opposition should also get up with their speeches, with their content. They should know what will make headline today. Okay. Same thing if you say every day. Look at BJP, how they have changed the discourse. I don't agree with a lot of things that they say, but if you start from first phase, Jinnah, Ganna, then Baba, Babua, how as they moved from one phase to another, their attack had something new, something different, and that made story and the right. So Alok, this brings us to another point जो हम लोग देख रहे हैं काफी एक polarization अगर हम लोग politics में कह रहे हैं या vote banks में कह रहे हैं तो ये polarization कुछ मीडिया पे भी impact है ना तो लोग कहते हैं कि अगर आप एक तरफा हैं
मीडिया मतलब एक एक तरफा है. One is with the government and one is with the opposition. One sees no good in the opposition, the other one sees no good in the government. और कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जो ऑब्जेक्टिविटी तो मैं नहीं मानती हूँ, पर एक रिपोर्टाज जो कहते हैं लोगों के तहत, हम लोग उसमें वी आर लूजिंग आउट. यू एग्री? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों तरफ के मीडिया के दो तरफ के हिस्से हो गए हैं और इसमें दुर्भाग्य की बात ये है, और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि जब मैंने सुनीता जी का जिक्र किया तो मेरा ये कहना नहीं था कि वो उनके अखबार में इस तरह का काम हो रहा है. मैंने सिर्फ ये कहा कि उनके लिए एक धर्म संकट की स्थिति होगी, क्योंकि वो इस वक्त एक अखबार की संपादक हैं और हम इस समय मीडिया के रोल पे चर्चा कर रहे हैं. तो कई बार ये लगेगा, मान लीजिए मैं कुछ ऐसी बात कह दूं, लगेगा कि ये इस पे कुछ नहीं बोली, ये चुप रही हैं, इसका मतलब ये इस बात से इत्तेफाक रखती हैं. तो मुझे नहीं लगता कि ये बोलूंगी आपकी हर बात पे बोलूंगी, बट सही बात बोलूंगी. लेकिन जो बात आप कह रही हैं ध्रुवीकरण वाली, वो बिल्कुल साफ है, पोलराइजेशन है. और कोई एक तो विचारधारा का पोलराइजेशन है. बहुत समय से आपको पता ही है, पहले अखबारों में लेफ्टिस्ट एलिमेंट बहुत ज्यादा होते थे, लेफ्टिस्ट लोग होते थे और वो खुलेआम हाँ, वो कार्ड होल्डर्स भी थे और वो कहते थे कि हम वामपंथी हैं, और क्योंकि वामपंथी समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में का रास्ता है, तो हम कोई उसमें फक्र होता था. जबकि कोई आदमी अगर संघ से जुड़ा हुआ आ जाता था, जो कि आते थे, धीरे धीरे आने लगे थे, 1978 के बाद ये बहुत तेज हुआ है, लेकिन उससे पहले भी लोग आ रहे थे, उनको चिढ़ाने के अंदाज में पूछा जाता था दफ्तर में, संघी हो क्या? आज आज की परिस्थिति यह है कि कोई ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है कि संघी हो क्या. उल्टे वो पूछते हैं, वामपंथी हो क्या, ये कौन दरबारी हो? तो एक डेफिनेशन आया कि ये गोदी मीडिया यानी वो मीडिया जो सरकार की गोद में बैठा हुआ है. इसके जवाब में गोदी मीडिया के लोगों ने या दूसरे लोगों ने या ट्रोल सेना ने एक नया टर्म कॉइन किया, दरबारी मीडिया. दरबारी मतलब जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी का दरबार है, उसकी सेवा करने वाला मीडिया दरबारी मीडिया हो गया है. ये दोनों मीडिया मुख्य धारा की, जिसको मेन स्ट्रीम पत्रकारिता कहा जाता है, हालांकि वो कितना मेन स्ट्रीम है इस पे एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन वहां जो तत्व हैं इस वक्त हावी, वो आप देख लीजिए, वो ज्यादातर वो लोग हैं जो इस वक्त की सरकारों के समर्थक हैं. वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के समर्थक हैं, और इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको न उनके संपादक ने कहा है कि ऐसा करो, न उनके मालिक ने कहा है कि ऐसा करो. वो आत्मा से वैसे ही हैं. उनको लगता है कि ये बिल्कुल सही काम हो रहा है, ये सरकार जिस दिशा में जा रही है, यही देश को आगे बढ़ाने का रास्ता है, और हमें धर्मपूर्वक इसका पालन करना चाहिए. अब प्रबंधन और संपादक क्या करते हैं? वो सिर्फ इतना सा काम करते हैं कि वो देखते हैं ऐसी कोई प्रतिभा कोई निकल के आई है बाजार में, तो उसको लाके अपने चैनल में रखा जाए, अपने अखबार में रखा जाए, और उसको फ्रंट पेज पे जगह दी जाए, या उसको प्राइम टाइम पे एक शो दिया जाए, ताकि एक तीर से दो निशाने सध जाएं. एक, इस तरह के कंटेंट की व्यूअरशिप, टीआरपी बहुत ज्यादा होती है, तो वो आपका सध जाता है, और दूसरा, सत्ता प्रतिष्ठान आपसे खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये लोग तो हमारी सेवा करने वालों के लिए जगह बना रहे हैं, इनके लिए स्पेस दे रहे हैं, तो हमको भी इनका ख्याल रखना चाहिए. और उस ख्याल रखने का आप उदाहरण देखना चाहें तो अभी आंकड़ा तो मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, सुनीता जी को शायद हो, उत्तर प्रदेश में एक सप्लीमेंट्री बजट पास हुआ वॉइस वोट से, जिसमें बहुत बड़ी रकम विज्ञापन के लिए, प्रचार के लिए दी गई है. और वो सब प्रचार कहाँ जा रहा है? वो यहीं जा रहा है. ये मोदी जी की, योगी जी की, केशव मौर्य की और स्वतंत्र देव सिंह की फोटो लगाकर योजनाओं के प्रचार हो रहे हैं चुनाव के पहले. केंद्र में भी आप देख लीजिए, टेलीविजन में जो उनके इवेंट्स हो रहे हैं, नए चैनल, अभी हाल में आपने देखा होगा 2-3 चैनल नए लॉन्च हुए, कुछ चैनल लॉन्च हुए, कुछ चैनलों का नाम बदल के नए कलेवर में पेश किया गया. वजह यह कि सरकार ने उनको शायद ये बात कही है, मैं बिल्कुल इस पे मोहर नहीं, लेकिन सरकार के विज्ञापन एक चैनल को कितने दिए जाएं, इसको लेकर सोच विचार चला. फिर हुआ कि आप ऐसा करिए, एक आध चैनल और खोल लीजिए, तो फिर 2 में ज्यादा दे पाएंगे, 3 में और ज्यादा दे पाएंगे. आप एक चैनल में कितना पैसा जा सकता है? और सारे इस वक्त तमाम मीडिया सरकार के विज्ञापनों पर बहुत बुरी तरह डिपेंडेंट है, निर्भर है. उनका खर्चा नहीं चल सकता अगर सरकार के विज्ञापन मिलने बंद हो जाएं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट बहुत कम हो चुका है, और वो अब उस तरह का पुल क्रिएट नहीं कर पा रहा है सरकार. और किसी मैनेजमेंट के पास बहुत आसान रास्ता है, सरकार को खुश रखो, इनसे मोटा पैसा लेते रहो और आनंद में रहो. तो वो रास्ता इस्तेमाल हो रहा है. इसमें कैजुअलिटी तो पत्रकारिता को होना ही है, भले ही वो महसूस हो रही हो ना हो रही हो.
संपादकों को कहता हो या न कहता हो, कई बार संपादकों को बिना कहे भी समझ में आ जाता है कि करना क्या है। वो एक सेल्फ सेंसरशिप आ जाती है कि ऐसा करने से हमको या हमारे संगठन, और मैं इसमें किसी को दोष नहीं देता हूँ। आप जिस संगठन में काम कर रहे हैं, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखेंगे, कल को वो अखबार बंद हो गया तो ना आप संपादक रहेंगे, ना आपके साथी नौकरी में रहेंगे। तो इस तरह के कंसिडरेशंस भी मुझे लगता है दबाव डालते हैं। लेकिन फिर आपके हमारे जैसे लोगों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लो काठे हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो हमको अब ऐसी चिंता है नहीं कि बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, 7 लोगों की, 10 लोगों की, 50 लोगों की रोटी चलनी है, कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे? अपना खर्चा चल ही जाता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है सोशल और डिजिटल मीडिया इम्पोर्टेंट भी होता जा रहा है, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया पर दबाव बहुत ज़्यादा है, और उन दबावों में ये भी ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप दिल्ली के किसी अखबार के संपादक से पूछ लीजिए, वहाँ आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप 2 लाइन की खबर फ्रंट पेज पे छपवा के देख लीजिए। वो इनसे ज़्यादा खूंखार तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कुछ मंत्री सरकारों में इसी काम के लिए बैठे हैं कि रोज उनका काम दिन भर टीवी देखना या अखबार पढ़ना है, और उसके बाद फ़ोन करना कि ये ऐसा कैसे छप गया, ये ऐसा कैसे चल गया, इसको तुरंत हटवाइए। जी। और ये सब तरफ हो रहा है, और मुझे डर ये इसी बात का है कि जब दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी, अगर वो आ जाती है, तो अब उसने रास्ता देख लिया। और वो रिवर्स नहीं वो भी करेगी। हाँ, वो इसको पीछे नहीं, हमें अगर ये लगता है कि कोई और सरकार आ जाएगी और वो बड़ी मीडिया को आज़ाद छोड़ देगी, नहीं। उन्होंने सबने रास्ता देख लिया है कि मीडिया को इस तरह से वश में रखा जा सकता है, और वो इस कोशिश में रहते हैं कि हमारे बस में रहे। वो ये नहीं चाहते कि मीडिया आज़ाद हो जाए। मीडिया पर कंट्रोल हमारा रहे, सामने वालों का ना हो। This is what it is, Sunita, we are always, just caught in the middle of this power cleft, as it were. Now, what I want to ask you is again something from what Alok said, the anchors, and television, where it is becoming more and more one-sided. When you look at the polarization, it is really between television and the digital media, I would say. It is more the electronic media going on one side, and the television media going on the other side, and in between are the newspapers. What I want to ask you, with your experience in print, is that how much of an impact this kind of sycophancy and this kind of one-sided anchoring that we see on television, where it is not news anymore, how much of that has had an impact on print media, given the fact that both have big owners? The digital doesn't have big owners, but these guys have big owners. I would like to talk about the practical aspect right now. When I was doing reporting myself, I had access to every political party. I could go and meet any leader. Nobody ever said, what is your ideology? No, nobody ever questioned my honesty. But today, to get access in a political party is becoming difficult. And in fact, there are few who have that access. So it's also, a journalist has to get information also. If I need information, I'll have to send somebody who has access to that information, who can at least meet that person, XYZ, otherwise they won't give appointment. Whether it is BJP or any other political party, not every journalist has access to every political party today. This was not the case when I was doing reporting. I had equal access to BJP. I could meet Kalyan Singh and anybody. I had equal access in Congress or in Samajwadi Party or Bahujan Samaj Party also. We never had to show our ideological face to get that information or access. Now, everybody, every journalist, they come from the same society. Yes, the politics, the type of divisiveness that you see today, we have not seen before. We did see upper caste, backward caste during Mandal. We did see during Ayodhya movement, Hindu, Muslim. We did see that. But that even the middle class today is willing to, for the sake of Hindu Rashtra or Hindutva, is willing to, ignore or, forgive the ruling party of their various acts of, which is impacting their lives, So
it has become very difficult. Now, coming to talking about electronic media or print media even. As print media, I think it is the role of the leaders. One, they should not have an ideology. If they have an ideology, the paper will have an ideology, because my boss will not tell me what to do. He thinks that Sunita Aron is the right person. She'll be able to handle it. Mrs. Bhatia won't tell me this is what you do. So it is my job, precisely my job, to see that my reporters don't go one-sided. And we really have to do. By now I know who has what ideology, and we have very open discussion with my reporters. When hijab discussion was going on, in fact, my colleague was very upset when he said, what if you come with a tika? What if there is a law which does not allow any tika in offices? In fact, you are not supposed to come with a tika. If that is the dress code for any office is that you won't have a chutiya or a tika. So Venika, what will happen? So naturally he was upset, and he didn't like it. So it is the job of the leaders to ensure it doesn't happen. We have to keep a watch on the social media. On the day of voting, one of my colleagues posted on Facebook, go and vote. And he used one picture of one candidate. And he told me, I did not do anything when I came to know about it. He said, I did not do anything. I only asked people to go and vote. Mecca, whose picture? He had to remove it. Another guy tweeted, my vote for BJP. I said, how can you do that? This is against the ethics, the electoral ethics. So somewhere I think maybe this is true about my generation. Maybe the upcoming leaders, they may be better. You never know how things will be tomorrow. So why should I doubt? But I think it's precisely, it is our job to handle it. But on a channel, it becomes very difficult. I was watching TV during polling, and channel I'm very fond of, and the anchor person I'm very fond of, the only channel I watch, was asking kisko ticket diya? Usne kaha law and order pe diya. To fir kisko diya? Bhajpa ko diya. You see, you are doing, election commission is not there right now. We never used to encourage this type of discussion on television during the polling day or till the polling was over. But if you look at channels during the polling times, the type of questions they were asking, the type of discussion that was going on, there was a messaging that was happening very silently. Right. Alok ji, jab hum log, I think all of us are old enough, and probably I'm the oldest, but you can, when we go back, when we were young reporters, तो उस वक्त हम लोग किसी के पास भी जब जाते थे तो we used to go, एक तरह से तो एक रिस्पेक्ट होती थी, दूसरा हमें अपना कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं थी कि हम किस तरफ हैं, कहाँ हैं, और तीसरी चीज हमेशा जो हम लोग को सिखाया गया था, जो हम लोग के एडिटर्स थे उस वक्त, और काफी प्रोफेशनल एडिटर्स होते थे, खाली उन लोग ने ये सिखाया था कि यू वोट फॉर द पीपल, आप एक मैसेंजर हैं, आप जो जनता है उसकी आवाज आपको कॉरिडोर्स तक ले जाने के लिए आप वहां पर हैं, ना आपकी कोई बायलाइन है, ना आपका कोई मतलब कोई ऐसी हैसियत है जिससे आप अपने आप को लीडर समझने लगे, बट यू आर अ रिपोर्टर हु इज देयर टू ट्रांसमिट मैसेजेस एज अ वेरी fact respecting person, you know, and a person who wants to speak the truth. और ये भी हम लोग को सिखाया गया था कि जैसे अब आप इलेक्शन में, मुझे याद है जब पहला इलेक्शन गए तो कहते हैं आप दिन और रात आप पॉलिटिशियन से मिलेंगे और उनसे बात करनी पड़ेगी और सब बातें होंगी और उनकी कैंपेन ट्रेल पे आप होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये याद रखना है कि आपको एक पूरा का पूरा डिस्टेंस रखना है बिटवीन यू एंड द पॉलिटिशियन. So it was एक तरह से you know dichotomy कि एक तरफ आप मिलिए और एक तरफ आप डिस्टेंस रखिए. तो इसके बारे में ये सब अब डिस्टेंसेस और ये रिस्पेक्ट और ये मीडिया मैसेंजर का जो रूप है ये सब ब्लर हो गया है ना, और इससे हमारे पे क्या नुकसान हम लोग को हुआ है, इस पे जरा बात करें. मैं आपसे पूछना चाहता था सीमा, आपने ये कहा, हो सकता है मतलब मैं उम्र के बारे में, सुनीता कंटेस्ट कर रही हैं तो मैं उस मामले में नहीं जानना चाहता, लेकिन आप मुझसे बड़ी हैं तो इसमें कोई शक नहीं है,
मैं जब पत्रकार बनने की हो सकता है मैं आपसे बड़ी हूँ। आप जाने मानी पत्रकार थी। जी। और मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, उस वक्त जब आप दिल्ली में बाहर घूमती थी और लोगों से मिलती थी, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी मिनिस्टर को सवाल इंटरव्यू लेने के पहले उनको आपने अपना क्वेश्चनर टाइप करके भेजा हो कि खाली क्वेश्चनर नहीं कभी भेजा, बल्कि अगर वो कहते थे कि हम आपकी कॉपी देखना चाहते हैं तो उनसे आप सीधे कह दिया जाता था कि बिल्कुल आपको ये इट्स नॉट अलाउड। जी जी। तो आज की तारीख में ये नॉर्म है, ये प्रैक्टिस है कि आप अगर पहले से लिखे हुए सवाल नहीं भेजेंगे और उनको अप्रूव नहीं करा लेंगे तो आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा किसी भी बड़े नेता का। आपके सवाल अप्रूव होने चाहिए। दूसरी बात जो भी सुनीता जी ने कही कि आप किसी भी लीडर के पास जा सकते थे और वो किसी भी पार्टी का हो, वो मानता था कि पत्रकार हैं, कुछ उल्टा सीधा भी पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है पत्रकार हैं, ये नहीं ना मेरी पार्टी के हैं ना सामने वाली पार्टी के हैं। आजकल ये सवाल पूछा जाता है, आप किसी ने पूछा भाई क्या करते हो, कहा पत्रकार हैं, अच्छा किस पार्टी के हो, तो ये बिल्कुल नेचुरल सवाल हो गया कि आप किस पार्टी के पत्रकार हैं। तो जो हमको ट्रेनिंग दी गई थी कि अपना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, जो कि आइडियल तरीका भी है जर्नलिज्म का, जो परिभाषा है आपने तो पढ़ी होगी कि साहब न्यूज इज व्हाट समबडी डज नॉट वांट यू टू प्रिंट, एवरीथिंग एल्स इज पब्लिक रिलेशंस। तो कोई नहीं चाहता है कि ये छपे, वो कैसे होगा जब आपका सब कुछ पहले से तय होगा, स्पॉन्सर्ड होगा, सवाल भी तय होंगे, जवाब तक लिखे हुए प्रिंटेड होंगे। अब कैमरे पे दिख गए अब तो कि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू चल रहा है, उसमें सवाल और जवाब दोनों लिखे हुए हैं, हाथ में दिख रहे हैं, तो ये कैसे हो पाएगा। और आप जब डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कर रही हैं, पहले तो ये था कि एक सभ्य डिस्टेंस मेंटेन करिए, आप मिलिए सबसे। आज की तारीख में डिस्टेंस के बजाय आपको विसिनिटी दिखानी होती है, आप कितनी प्रॉक्सिमिटी है आपकी, आप कितना अंदर तक घुस के जा सकते हैं। और ये आपके ज़माने में आपके साथी एक बड़े पत्रकार हुए हैं, उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी, वो हिंदी के पत्रकार थे, बाद में अंग्रेजी के संपादक बन गए और अब तो मीडिया के मालिक हैं और बड़े राजनेता भी हैं। तो वो ये दिखाते थे कि वो राजीव गांधी के कितने करीब हैं, उनके कमरे से निकलते हुए वो अनेक लोग उनको सलाम करते थे। तो ये परंपरा वहाँ से चली है, लेकिन ये परंपरा बहुत फल-फूल रही है। इसीलिए जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी का दिवाली मिलन जो होता है, उसमें एक रिपोर्टर ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खींचने की माँग की कि मैं एक सेल्फी ले लूँ। मुझे बहुत अजीब-सी बात लगी, ये मेरी रिपोर्टर थी। मैं उसको फ़ोन करूँ इससे पहले मैं देख रहा हूँ कि पूरा शहर सेल्फी लेके घूम रहा है। आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, आपको बुलाया गया है, ठीक है, लेकिन आप सेल्फी खींचने के साथ ही आप ये दिखाते हैं कि आप उनके फ़ैन हो गए हैं। और इस वक़्त आप मुझे याद दिलाइए, मुझे एक भी अपना इंसिडेंट याद नहीं है कि मैंने किसी भी इंसान के साथ फ़ोटो खिंचवाई हो, उसका इंटरव्यू करते हुए, जबकि मैं टेलीविज़न में काम करता था। बिल्कुल है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं हम लोग के पास। वो नहीं लेते थे क्योंकि हमको लगता था कि ये हमारा काम है, इसमें मैं ये फ़ोटो का क्या करूँगा, कहाँ दिखाऊँगा? ये फ़ोटो खिंचवा के कुछ लोग ऐसे हैं जो सदा अपने साथ कैमरामैन लेके घूमते थे फ़ोटोग्राफ़र कि इनके साथ फ़ोटो, उनके साथ फ़ोटो। हाल में एक किताब आई है जिसमें 50वां हस्तियों के साथ संपादक जी की फ़ोटो हैं। तो वो एक अलग परंपरा थी, लेकिन उसको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। आज की तारीख में वही जो है सबसे श्रेष्ठ परंपरा हो गई है। पत्रकारों में सबसे श्रेष्ठ वो है जो मोदी जी के दरबार में पहुँच सकता है, या दूसरी तरफ अभी कल को मान लीजिए किसी तरीके से कांग्रेस सत्ता में आ जाए, तो जो राहुल जी के या सोनिया जी के दरबार में पहुँच रखता होगा, वो श्रेष्ठ हो जाएगा। तो ये जो नया तरीका है, इसमें अब पत्रकारिता का क्या होना है, ये तो बहुत जिसको कहते हैं बहुत ही दुरूह सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, जिसका जवाब देना मेरे लिए तो संभव नहीं है। So we are slipping badly, right, Sunita? We're really going down. Look, I'll tell you, we were talking about photographs with politicians. I have two. And I have with Abdul Kalam when he had come to our office. And I'm very proud. And when I went to President House, because we had done a program. And I really, I'm very, I feel very proud to have that. And I have one photograph with Ajalji. It's a very interesting picture where with a finger I'm telling him something as if I'm and that this was to do with Lucknow when he was a Lucknow MP and he became PM. I went with some demands of Lucknow people. And there were some other people also. That's another photograph. I think Alok didn't mean it specifically. No. I'm propaganda you that we do. No. What I'm trying to tell you that sometimes even I don't have others and I don't care. But these are two, sometimes even a journalist.
Now, yes, we are entering a very, very tough time, and there's no doubt about it. I think print has more problems. You know, when you are having a discussion on TV, sometimes I've heard people saying a lot of things of which they may not have any evidence. You can say so much, you can make accusations and all that. But in print, once it goes in print, it becomes very easier for them to do. And now in the social media, you have press readers. So even if you are withdrawing your story, there are a whole lot of issues that crop up. Third, earlier, people used to think 10 times or 100 times before telling a newspaper or a journalist that we will go and complain, we will do this, we will do that. I remember that time when we were writing, they used to say, don't write, otherwise there'll be action, by the government. Now, no action happens, they know they can manage people at that level, and you don't get any relief from anywhere. So I think we are heading into a very, very difficult phase. And as Alok said, that the coming governments and the coming generation are going to pick up all the lessons, the good and the bad ones from what we have today. And this is going to make it more. Second, the new generation that is coming, some of them are just drifting into this profession. They're not coming with that, passion, that even if you get a salary, that passion, something which we always felt excited, never asked, okay, am I getting a hike or not? It's only in the later years you start thinking about that. But we came with a, not a mission, I will not call it a mission, but we came with a passion. But this new generation, they are just coming, some of them are just entering, and then it's a stopover, and then they move to, more lucrative jobs. So they can be more pliable. And they are in a hurry to touch the sky. So I think from both sides, from what we get and how we handle things tomorrow, I think from both sides, there has to be a lot of effort. Otherwise, yes, we are entering a dark phase. So I'm just going to now encapsulate what we've discussed. And this is really all of the problems that we are facing and are contending with as journalists who want to remain good journalists. I'll end with this question to both of you. I'll start with you, Sunita, and then end with Alok. All this that we've said and all the problems that are happening, how does that impact on a good and objective coverage of elections such as in UP? And can I or you or anyone as a lay reader depend on the media to be able to newspaper or the one channel without getting completely ideologically distorted? No, I don't think so. Seema, there are two things. One, because of COVID, people have not traveled so much. Second, 403 constituencies have a different, each and every constituency has a different story to tell. Of course. So you might get information, but you will not get an assessment. If you think that after reading newspapers or after watching television or even social media, the problem is that while channels are going all there, you can see the tilt towards BJP in social media. Mostly they are anti-BJP. So where is the balance? I sometimes I feel, where do I get that balance? What should I watch? Where is the cutting line where I need to, know, okay, they're here and they are here. So yes, maybe you can get information. It's a very, very tough election for any journalist to cover. And there are factors which I was discussing with you, that nobody wants to believe that BJP can lose. The might of the BJP, the charisma of Modi and the Yogi vote bank, and Amit Shah's management, everything put together. And then you have Akhilesh Yadav doing social alliances for the first time, which he had not done earlier. So we really don't know whether Kurmis, they in one district, there are 11 constituency, the Kurmi voting pattern will be very different. There is no wave as per se on surface. Yes, there is an undercurrent, you do feel that. But
somewhere you feel, is it possible? Because Akhilesh stands at 47. He has to take a leap and not just a mere jump to reach the magic figure. They are at 321. They have to fall and drastically fall to lose power. So there are a whole lot of issues. And Mayavati, what is she up to? You really don't know, because she can transfer her vote. She has done it in the past. So I think you can get information. You can know, you can feel the political narrative that is going on, the issues that are in the fray. But beyond that, I think people won't even know who's the candidate and what actually happened. तो यही चीज आलोक जी, यू नो लाइक ये पोलराइजेशन की हम लोग ने बात की, और एक तरफा ये है कि बीजेपी इज रिटेनिंग और विनिंग, एक तरफ है कि अखिलेश यादव की स्वीप हो रही है, देयर इज अ वेव दैट इज इन हिज. अगर मैं एक अखबार लूं या एक टेलीविजन चैनल देखूं या एक डिजिटल मीडिया को देखूं, तो मुझे तो पिक्चर आएगी नहीं. आई मीन आई एम टॉकिंग ऑफ द ले पर्सन, यू एंड आई एंड सुनीता कैन वर्क आउट समथिंग. तो कैसे? बिल्कुल नहीं आएगी. और आप एक की बात कर रही हैं सीमा, मैं कह रहा हूं कि आप 8 अखबार पढ़िए तब भी नहीं आएगी. मैं इसीलिए आपको मैंने कुछ देर पहले कहा कि मैं ना अखबार पढ़ रहा हूँ ना टेलीविजन चैनल. कोई खास चीज, किसी का आर्टिकल पढ़ना है, लेख पढ़ना है, उसके लिए चला जाता हूँ, लेकिन खबरों के लिए इनको पढ़ने का मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा है या टीवी देखने का. इसलिए मैं बिल्कुल सीधा साफ जवाब दूंगा कि आप एक अखबार की बात कर रही हैं, आप सारे अखबार मिला के पढ़ लीजिए तब भी वो तस्वीर नहीं. तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन इसी में फिर कहते हैं बहुत अंधेरे से ही रोशनी की किरण निकलती है, तो वो उसका इंतजार करना चाहिए. चलिए, on that hopeful note, I'll thank both of you for giving this time. Thanks a lot. This was interesting. Thank you. So, thank you. Thank you. Thank you, Alok ji. Always great to listen to you. Bye.